Hello students, welcome to Vipin Sharma Physics channel. Dear students, sometimes I come across some doubts of the students and they put so many doubts, inside the class, outside the class. So some doubts are such that, like which are not very much related with the syllabus, but sometimes it is the student's query for which students is willing to go to the teacher and ask questions, right? So I have been asked one question by a student that, sir, what is the difference between limitation and drawback? What is the difference between limitations and drawback? To answer such question, I have to satisfy the student using an example. I have to satisfy the students using an example. I ask student, well, I'm which subject instructor? He said, sir, instructor? You're a physics teacher? No. अभी मुझे फिजिक्स सीखना है, अभी तो मैं टीचर नहीं हूँ, इंस्ट्रक्टर हूँ. तो हाँ, मेरे गुरु, मेरे फिजिक्स जिनको मैं आइडियल मानता हूँ, श्री सुरेंद्र लाल सर, वो मुझे बोलते हैं यू आर एन इंस्ट्रक्टर, यू आर येट टू बिकम अ टीचर. तो मेरा लिमिटेशन और ड्रॉबैक समझाने का क्या कॉन्सेप्ट है कि मैं फिजिक्स इंस्ट्रक्टर हूं और मुझे फिजिक्स के बारे में पूछा जाता है. सर, फॉर एग्जाम्पल, ए स्टूडेंट इन मी इज आस्किंग ए क्वेश्चन टू द टीचर इन मी, सर व्हाट इज मोमेंटम? मैं बोलूंगा मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. अब मैं एक इंटेलिजेंट हार्डवर्किंग स्टूडेंट हूं, मैं पकड़ लूंगा सर को, सर ये गलत है. नो बेटा, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर p. p is equal to m into v. Yes sir, you're right, but this is not the definition of momentum. What is the definition of momentum? It is the quantity of motion contained in a body. It is the quantity of motion contained in a body. That is called momentum. Oh. Yes. It is measured as the product of mass and velocity, and it is a vector quantity. Oh, yes, sir. Yes. Do you know? This is my drawback. I am teaching what if I am not knowing its basic concept. That is my drawback. I am a pilot, but I don't know how to land and take off. This is my drawback. Got it? Now, limitation. Now, a student is asking me a question. Sir. Yes. Sir, गेंदे का फूल फूल होकर फूल नहीं है, क्यों? अब this question is not related to my subject, which I little bit know. गेंदे का फूल फूल होकर फूल नहीं है. Very simple.
जिस तरह से गोभी का फूल फूल होकर फूल नहीं है, तो गेंदे का फूल फूल होकर फूल नहीं है बाबू मशाई। सर ये आपका सब्जेक्ट है? नो। तो क्यों पंगा ले रहे हो? मतलब तुम माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोचॉन्ड्रिया बोलोगे और माइटोचॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया बोलोगे। सर ये तो आपका सब्जेक्ट ही नहीं है, तो आप क्यों आंसर करने की कोशिश कर रहे हो? तो दिस इज माय लिमिटेशन। चीनी खाते हो और मिठास नहीं आती है, दैट इज अ ड्रॉबैक। चीनी खाते हो, नमकीन टेस्ट नहीं आ रहा, दैट इज अ लिमिटेशन। होप इट इज क्लियर। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। इसका नाम है सागा डाउट, और ये हम लोग इंडोर आउटडोर ये मैं जरूर एक रोज डाला करूंगा आपको। अच्छा लगा तो डू पुट कमेंट्स ऑन इट। इफ यू लाइक इट, you know what you have to do. Thank you. Bye bye.